Hello and welcome back to the another episode of Daily News Analysis for UPSC 2025. It is 16th July and we are going to discuss these 7 articles. Before we start our discussion, I would like to take this moment to introduce this channel to you guys. You know, every day during day session and during night session we upload two videos. One which is this one, in which we discuss the daily current news analysis, which are those articles which are the most important for you guys. और फिर शाम या इवनिंग सेशन में we upload another video in which we discuss the daily quiz every day. We take almost 10 to 15 questions which are related to the current affairs, and few questions are related to the previous year question papers. So with this, I would like to request you guys, please do stay with me. Don't look at my introduction. Usually what we do when we click on any channel, if we like the introduction part, then we will watch it further. If not, we will skip it there. So my request to you guys, sometimes people fumble while introducing. So please do show some patience and stay with me. I'm sure you would definitely like this video. And I had explained these articles in a very simple language. So my request to you guys is, please do stay with me and do subscribe to this channel and share it with your friends so that it will give me the motivation to work more hard on it. Now, without any delay, let's start our discussion. Today we have to discuss 7 articles. First, it is related to the gig economy. Then, second article related to the money bill. Third article related to the EEG. Fourth, WPI. Fifth, ICAR. Sixth, rupee ruble payments, and finally the trade deficit. So, without any delay, let us start our discussion. First we have to discuss about gig economy. If you had watched my videos, you are following this channel, you would come to know that we had already discussed this article in very much detail. We discussed the Karnataka's proposal also. We discussed what states want, what is the confusion there. Now let us discuss it in more detail. First we should know that what gig economy is. It is a labor market that relies heavily on temporary and part-time पोजिशंस फिल्ड बाय इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर्स. मतलब कि अगर हम देखेंगे एक सिंपल डेफिनेशन जो ये गिग इकोनॉमी की है, ये एक मतलब इसे पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं जो मतलब कि एक कंट्रैक्ट के तहत काम करते हैं फॉर सम टाइम, एंड देयर इज फ्रीडम फॉर द एम्प्लॉयर टू हायर देम और टू फायर देम अकॉर्डिंग टू देयर विल. और जो वर्कर्स होते हैं दे वुड बी पेड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. ना कि अगर हम देखेंगे परमानेंट जॉब में they have to pay them after 1 month or what time would be there, but in this gig economy they would be only paid after they work. For example, हम देखेंगे delivery boys for the Zomato, या हम देखेंगे Uber drivers या Ola drivers, मतलब वो अपना काम करेंगे तभी उनको पैसा मिलेंगे. So this is about the gig economy. Now देयर मतलब कि अगर हम देखेंगे देयर आर, जो हमने परसों भी एक कर्नाटका की बिल पढ़ी थी, व्हाट वाज देयर प्रपोजल. सो टुडेज डिस्कशन इज अबाउट द कंसर्न्स रिलेटेड टू द स्टेट्स बिल्स एंड व्हाट द सेंटर हैज प्रोवाइडेड. अगर हम देखेंगे राइट नाउ द यूनियन गवर्नमेंट दे हैड इंट्रोड्यूस्ड 4 लेबर कोड्स, जिसमें से टू इम्प्लीमेंट विच आर, मतलब कि अगर हम देखेंगे इन आवर कंट्री देयर आर मनी लेबर लॉज. अगर हम उन सबको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे सो मतलब इतने सारे लेबर लॉज है कि ये कहा जाता है कि अगर हम 100% इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो तकरीबन बहुत सारा कंट्राडिक्शन हो जाएगा लेबर लॉज के दरमियान. सो इट इज़ नॉट ईजी टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज लेबर लॉज. सो टू avoid this confusion, the center has brought up the 4 labor codes. और उसमें से अगर हमें मतलब what is important for the gig economy, the one labor code is code on social security. So the code on social security, it is the most important for the gig economy, for the gig laborers. This code on social security describes the gig workers. This social security benefits the gig workers, and also मतलब कि अगर हम देखेंगे मतलब कि जो ये gig workers होते हैं they have least security of the job. सो ये कहा जाता है कि अगर इनके पास लीस्ट सिक्योरिटी ऑफ जॉब है या कोई खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो, फॉर एग्जांपल फॉर ऊबर, देयर इज लीस्ट प्रोटेक्शन फॉर हिम. तो उसके लिए
मतलब कि जो स्टेट्स का डिमांड है, या मतलब कि डिमांड है इस वक्त कि जो कंपनीज है दे शुड प्रोवाइड सम मनी टू दिस वेलफेयर ऑफ दिस गिग वर्कर्स, सो दिस होल कंसेप्ट रिवॉल्व्स बिहाइंड इट। मतलब कि जो आज का डिस्कशन है इट रिवॉल्व्स बिहाइंड इट कि जो सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए इनको गिग वर्कर्स को वो होनी चाहिए, ना कि अगर उनके साथ कुछ भी हो उनको वो कहते हैं मतलब कि दे शुड हैव जॉब सिक्योरिटी, दे शुड हैव मतलब कि वो इंश्योरेंस शुड बी देयर, गारंटी शुड बी देयर फॉर दीज वर्कर्स। तो इसी बिना पे अगर हम देखेंगे कर्नाटका गवर्नमेंट दे उन्होंने अपना प्रपोजल दिया था कि देयर उन्होंने कहा था देयर इज नो सफिशिएंट सोशल प्रोटेक्शन टू गिग वर्कर्स, सो देयर शुड बी मतलब कि उन्होंने कहा था कि कंपनी में से कुछ परसेंट जो प्रॉफिट मिलता है सेस करना चाहिए कि जो उन जो फॉर विच वुड बी यूज्ड फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ दीज गिग वर्कर्स। एंड ऑल्सो उन्होंने कहा था नो सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ जॉब सिक्योरिटी, हायरिंग एंड फायरिंग इज इजी। मतलब कि जो कर्नाटका की बिल में ये भी एक पॉइंट था कि जो हायरिंग और फायरिंग ऑफ दीज पीपल इट इज़ वेरी इजी फॉर द कंपनी, क्योंकि उनको ज़्यादा पूछताछ नहीं होती है, इट इज़ बेसिकली टेम्पररी बेस्ड जॉब। सो तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कि फॉर एग्जांपल दे शुड गिव द 1 month नोटिस टू देम एंड शुड हाईलाइट द रीजन व्हाई दे आर फायरिंग देयर लेबर्स। एंड ऑल्सो अगर हम देखेंगे दीज प्राइवेट कंपनीज दे अर्न लॉट ऑफ मनी थ्रू गिग वर्कर्स। अगर हम राइट नाउ द सिचुएशन देखेंगे, क्योंकि दे मतलब कि जो ये प्राइवेट कंपनीज है दे टेंड टू हायर दीज ओनली रादर देन परमानेंट जॉब वर्कर्स, क्योंकि उनको पता है अगर वो परमानेंट जॉब वर्कर्स देंगे irrespective of their work they have to pay them and it would be hard for them to hire them, so they tend to hire these gig workers ताकि उनको वो तभी पे करे जो उनको जब वो काम करे। और दूसरी बात we had seen the increase in the gig workers of this clause only, मतलब कि जो ये मतलब जो ये easy to hire and fire them and they would be paid according to their work। Because of these things this gig economy has increased in our country and the it has benefited the companies। now ये concerns थे कर्नाटका गवर्नमेंट के कि ये चीज़ें होनी चाहिए, देयर शुड बी सोशल सिक्योरिटी, देयर शुड बी मतलब कि एक एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कंपनी की तरफ से कि वो क्यों निकाल रहे हायरिंग और एंड फायरिंग के वक्त दे शुड गिव द नोटिस फॉर देम। और दूसरी बात दे शुड गारंटी देयर वेल बीइंग, और वो सब मतलब इंश्योरेंस शुड बी गिवन, दे शुड बी गारंटीड फॉर द लॉट ऑफ बर्डन ऑन देम। मतलब कि जो बर्डन अगर हम देखेंगे इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस दे हैव लॉट ऑफ बर्डन, क्योंकि वो चाहते एक चीज़ है जब आपको अपने काम के तहत पैसा मिलेगा यू वुड टेंड टू वर्क मोर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वर्किंग फॉर ए मंथली बेस्ड, आपको परमानेंट जॉब है तो आप उतना काम करोगे और फिर आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देते हो, यू वर्क अकॉर्डिंग टू योर मतलब कि आपको दिन में एक प्लान रहेगा उतना ही करोगे। लेकिन व्हेन यू आर ए गिग वर्कर और आपको पैसा मिलता है कि अपने काम के लिहाज से सो यू टेंड टू वर्क मोर ऑन दैट, यू पुट मोर एफर्ट ऑन दैट एंड दिस लीड्स टू मोर बर्डन ऑन दैट। और जब ये ज़्यादा बर्डन रहता है तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेंगे आप उबर ड्राइवर को लेंगे, अगर यूजुअली अगर वो होता परमानेंट ड्राइवर ऑफ ए कंपनी ही वुड पेड मंथली सैलरी, तो वो क्या करता वो जब काम रहता उसको मतलब कि जब जब कस्टमर आते तब वो अपने फ़ोन तब वो काम करता 10 से 5 तक, फिर 5 बजे घर जाता। लेकिन when you are a gig worker you are dependent on the algorithm and you keep your phone available for that, so आप दिन भर रात तकरीबन 12-10 घंटे से लेकर तकरीबन 15-16 घंटे तक काम करते रहते हो। और इसकी वजह से कि आपको थकान आती है, योर ब्रेन मतलब कि आपके दिमाग भी थक जाता है, आपकी सोचने की सलाहियतें कम हो जाती है एंड दिस में लीड टू द एक्सीडेंट्स। सो व्हाट डज द स्टेट्स वांट हियर, दे वांट दैट देयर शुड बी द सोशल गारंटी फॉर देम कि खुदा ना खासा अगर कुछ ऐसा हो कि दे शुड बी मतलब कि प्रोटेक्टेड हियर। बट हियर द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हमें ऑलरेडी लेबर लॉज है, इफ वी हैड ऑलरेडी लेबर लॉज व्हाई डू वी नीड दिस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ दिस लेबर लॉज। अगर हमें ऑलरेडी सेंटर ने लेबर लॉज दिए तो हम क्यों ये लेबर लॉज लाते हैं, व्हाट इज नीड ऑफ दैट एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लेबर लॉज। सो इसके
For this we have to discuss what are the disadvantages if these labor laws are put in the hands of the Karnataka, in the hands of the state government. अगर हम देखेंगे जो लेबर लॉज सेंटर की तरफ है, फ्रॉम द सेंटर दे हैड ऑलरेडी डिफाइंड द गिग वर्कर्स, you know, they had also once these labor laws are implemented, it will give the social security to those social security and safety to the gig workers. एंड ऑल्सो अगर अब जो मतलब कि लेबर लॉ है सेंटर की तरफ से वो सोशल सिक्योरिटी भी दे रही है लेबर को, वो दूसरी बात, यू नो, दे डिफाइन द लेबर लॉज इरेस्पेक्टिव जो कर्नाटका बिल ने हमें दिया था, दैट डिड नॉट डिफाइन एट द गिग इकोनॉमी, बट दिस जो सेंटर की तरफ से लेबर लॉज है, दे डिफाइन द गिग लेबर्स, दे डिफाइन एंड दे गिव देम द सोशल सिक्योरिटी. अगर हम इस वक्त पे लाएंगे, सेंटर भी इन्वॉल्व होगा, स्टेट भी इन्वॉल्व होगा, सो इट विल लीड टू द ह्यूज कम्प्लेक्सिटी, और इससे क्या होता है, लॉट ऑफ फ्रीडम फॉर एम्प्लॉयर्स विल बी लॉस्ट, मतलब कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनकी फ्रीडम लॉस्ट होगी. अगर हम देखेंगे गिग इकोनॉमी हैज़ वर्कड फॉर कंपनीज, पेमेंट टू गिग वर्कर्स डिपेंड ऑन देयर वर्क, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट इज वाई गिग इकोनॉमी हैज़ thrived in India. That is the reason we discussed it also. So flexibility should be there. अगर स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होंगे, दे विल टेक द, मतलब कि वो इन्वॉल्व होंगे इन द कंपनीज मैटर्स, और उसकी वजह से क्या होगा कि फ्रीडम, कंपनीज की फ्रीडम छीनी जा सकती है, एंड दे विल नॉट अप्रिशिएट दैट. दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट विल टेक ओवरराइडिंग पावर्स लेंगे. फॉर एग्जांपल कंपनी कुछ चाहती होगी बट स्टेट गवर्नमेंट उसको ओवरराइड करेगी, दे विल डिक्टेट हाउ कंपनीज विल वर्क, एंड दिस विल लीड टू द रिटर्न ऑफ लाइसेंस राज. एंड ऑल्सो देयर वुड बी डिस्क्लोजर ऑफ नॉर्म्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी नहीं चाहती है कि वो डिस्क्लोज करे, उनकी प्राइवेसी हर्ट हो सकती है. सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट कि जो सेंटर के लॉज है, दोज लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड रादर देन स्टेट्स अननेसेसरीली इसमें इंटरैक्ट करें. सो दिस वाज अबाउट द कंसर्न्स रिलेटेड टू कर्नाटका बिल, एंड दिस वाज अबाउट द गिग इकोनॉमी. आई होप I made it very clear for you guys. Now let's recap what we understood from it. पहली बात जो गिग इकोनॉमी में हमने पढ़ा, इट इज़ द टेम्पररी बेस्ड जॉब मिलता है, डिपेंड करता है हाउ मच वर्क, उसी के लिहाज से आपको पैसे मिलते हैं, इसमें पहली बात. दूसरी बात, सेंटर ने लॉज लाए हैं, बहुत सारे लॉज, दे आर कन्फाइंड इन 4 कोड्स, और उसमें से एक कोड है सोशल सिक्योरिटी का. लेकिन इसी वक्त स्टेट्स चाहते हैं कि वो गिग इकोनॉमी को, मतलब गिग वर्कर्स को, दे शुड प्रोवाइड देम सिक्योरिटी, क्योंकि वो लैक सिक्योरिटी है, उनको कभी भी फायर कर सकते हैं, मतलब कि उनकी कोई गारंटी नहीं है. But the author here asks the question whether the interference from the states is necessary or not. Should states bring these laws or not? तो author कहता है कि there are more disadvantages to this than the advantages, because अगर हमें already center की तरफ से we have the laws which define the gig workers, which give this safety to them, it is better to implement them rather than giving your own laws. अगर आप अपने खुद के laws लाएंगे तो it would create more complex, it will make it more complex. So अगर ये ज़्यादा complex होगा तो उसकी वजह से ज़्यादा problems होंगे. दूसरी बात, अगर states interfere करेंगे तो वो employers की freedom को snatch करेंगे, क्योंकि अगर हमने देखा जो employers वो चाहते हैं कि मतलब कि this gig economy has worked for them, उनका जो profit इस gig economy से बहुत increase हुआ है, और it will definitely hurt them. और तीसरी बात हमने ये भी देखी, states may override the companies and this may lead to the license raj again. और चौथी बात हमने ये भी देखी कि जो कंपनी की एक प्राइवेसी होती है, दैट में बी वॉश्ड आउट, वो मतलब कि उनका प्राइवेसी हर्ट हो सकता है इसकी वजह से. सो इट इज़ रिकमेंडेड टू हैव द सेंट्रल लॉज एंड इम्प्लीमेंट देम efficiently, और उनके ही सेंट्रल लॉज को ही देखा जाए कि कहाँ पे चेंजेस ला सकते हैं. नाउ मूविंग टू article, it talks about the SC to look into the money bills to pass laws. You know about money bill, we should know few things, that it is only introduced in Lok Sabha और प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट होनी चाहिए, और राज्यसभा का रोल इसमें बहुत लीस्ट है. फॉर एग्जांपल अगर स्पीकर, और एक बात जब कोई बिल लाई जाती है लोकसभा में, देन स्पीकर, इफ स्पीकर सेज इट इज ए मनी बिल, देन
it can't be challenged till now, it can't be challenged in the court. ये केस अभी चल रहा है, so it is related to that. तो इसमें क्या होता है मनी बिल में, जब एक बिल को स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही डिक्लेयर्ड इट इज अ मनी बिल, सो इट इज मतलब अब इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि, तो इसी के लिहाज से हम देखेंगे हाउ गवर्नमेंट हैज मिसयूज्ड दिस क्लॉज इन allegedly misused दिस क्लॉज. तो हम देखिए फॉर एग्जांपल लोकसभा ने डिक्लेयर किया किसी बिल को मनी बिल, देन फिर क्या होता है, देन इट, अगर हम राज्यसभा, जब वो राज्यसभा पूछेंगे, राज्यसभा विल हैव वेरी लीस्ट पावर्स विद रिलेटेड टू दैट, दे कैन ओनली रिकमेंड द चेंज. फॉर एग्जांपल वो अगर कुछ चेंजेस करना चाहे वो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं वो चेंजेस, बट दे कैन नॉट मतलब कि एनफोर्स दोज चेंजेस ऑन द लोकसभा, और विद इन 14 days इट विल बी रिटर्न बैक और फिर बिल पास हो जाएगी. सो दिस इज अबाउट द मनी बिल. अब इसमें वाई इट वाज ब्रॉट इन, क्योंकि हमने देखा, अगर हम देखेंगे जो ब्रिटेन का गवर्नमेंट था, मतलब कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट था, देयर व्हाट यूज्ड टू हैपन कि वहाँ पे हर एक बिल जो लोअर हाउस मतलब कि राज्यसभा के की तरह था वहाँ पे, तो वो हर एक बिल को रोकता था वहाँ पे, मतलब कि बहुत डाइल्यूशन होता था, मतलब पॉलिसी मेकिंग बिकेम वेरी डिफिकल्ट. सो टू अवॉइड दिस कंसेप्ट ऑफ मनी बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड. So this money bill, it is related to the taking money from the consolidated fund of India. It is mentioned in Article 110 A from A to G. All the what जो भी इसमें होना चाहिए वो सब सारी चीजें इसमें होती है. Also in this money bill we should know that speaker's declaration is final. जब वो declare करता है ये money bill है तो final है. अब इसी के लिहाज से there were two laws, for example PMLA and the other law, when the speaker declared that they are the money bill, and it was very controversial then, क्योंकि वो जो opposition थी वो कहते थे कि मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो इस लॉ को पास करने के लिए इसको मनी बिल डिक्लेयर करते और फिर इस लॉ को पास करते हैं डायरेक्ट, और इसकी वजह से जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री वो हर्ट हो जाता है. सो इन दिस रिगार्ड दिस लॉ, दिस केस वाज फाइल्ड इन द Supreme Court regarding that other case, and Supreme Court upheld the decision of the speaker. But right now the case is in the Supreme Court that whether this money bill जो उसका जो फाइनल डिसीजन है स्पीकर का, शुड इट बी मतलब कि क्या इसको ऐसे रखे कि, और इट शुड बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, मतलब क्या वो अथॉरिटी होनी चाहिए. दिस इज येट टू बी डिसाइडेड एंड इट वुड बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर, आई एम श्योर. और इसका 7 बेंच जज का मतलब केस है ये, सो इट वुड टेक सम टाइम, but this case is in the news. So in this article we have to know about the money bill. We have to know how government can misuse it for their own benefits, क्योंकि जब लोकसभा में उनकी गवर्नमेंट होगी तो डेफिनेटली दे हैव द, मतलब कि अगर हम देखेंगे प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी सारे मतलब दे हैड द मेजॉरिटी देयर, और जब भी वो कोई बिल पास करना चाहे विदाउट एनी प्रॉब्लम वो पास कर पाते थे उस बिल को. और फिर अगर राज्यसभा में जाती तो ठीक, if they fear the Rajya Sabha then they would declare it the money bill and deal it like that. So it is allegedly said so. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में मसला पूछा, एंड सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड whether the speaker's declaration of a money bill is final, whether it would be sent to the court for the second look, क्या मतलब उसको whether it would be speaker's declaration is challengeable in the court. It is under discussion right now. अगर हम देखेंगे it cannot be challenged, but it is in the court. So let us see what the court says about it. Now coming to the third article of today's discussion, it talks about the 100 years of EEG. It was conducted back in 1924 by Hans Berger. He was the inventor. He conducted it. अगर full form हम EEG की देखेंगे, it is electroencephalography. It is electroencephalography. अगर हम देखेंगे what is it about, अगर हम usually देखेंगे our body is made up of cells, और cells में we have membranes, we have different kind of cells. Similarly we have neurons. तो जो ये न्यूरॉन्स है, दे फंक्शन, उनकी फंक्शन क्या है, जिस फंक्शन इज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन व्हाट एवर वी हैव टू डू, ये फ्रॉम ब्रेन टू द जहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल हमें
बाजू हिलाना है, तो ये ब्रेन से बाजू तक इंफॉर्मेशन डिलीवर करेगा कि बाजू हिला तो वी वुड मूव आवर आर्म्स. सो न्यूरॉन्स का बेसिक काम ये है. दीज न्यूरॉन सेल्स डिस्पर्स द इलेक्ट्रो चार्जेस. सो जो ये न्यूरॉन से डिस्पर्स करता है इलेक्ट्रो चार्जेस, ये कैसे हमें पता होना चाहिए. जो न्यूरॉन का सेल है इट इज़ ए पोरस मेम्ब्रेन, और इसमें सोडियम पोटेशियम भी होता है. जब सोडियम अंदर आता है एंड पोटेशियम सोडियम पोटेशियम साइकिल जब वो अंदर और बाहर जाता है फ्रॉम द मेम्ब्रेन, सो देयर जो सेम चार्ज है दे ट्राई टेंड टू रिपेल, और बिकॉज ऑफ दैट दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, एंड that electric charge is caught under this electroencephalography. और इसकी वजह से we can study the मतलब कि कितना नॉर्मली सब कुछ चल रहा है. if there would be anything abnormal it would show it. और the question here is it precise, जो हम यहाँ से डिसीजन लेंगे क्या वो 100% सही होगा. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. वी हैव टू गो फॉर अदर डिसीजंस, अदर मतलब टेस्ट्स आल्सो, क्योंकि जो इसमें मतलब कि डिसीजन लिया जाता है दैट इज़ मतलब कि जब वो मशीन आपके सिर पे लगाएंगे, वो जो ऊपर वाले न्यूरॉन्स है मतलब सबसे टॉप वाले न्यूरॉन्स, इट वुड take the reading of those neurons only. So we can estimate from here, but we cannot give the conclusive decision. For the conclusive decision you have to do other tests like MRI and other tests there. And also it is non-invasive technique, मतलब कि आपको कुछ काटा वाटा नहीं जाता है, ये ऊपर से लगाया जाता है and it catches the electromagnetic reactions. तो in simple this is about EEG, which is electroencephalography. जो मतलब अगर हम रिकैप करेंगे, इट वाज कंडक्टेड बैक इन 1924. इसमें न्यूरॉन्स में सोडियम पोटेशियम साइकिल होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्जेस डिस्पर्स होते हैं, और दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज वो नोट किया जाता है विच आर मतलब कि इस मशीन के थ्रू, और वो रीडिंग्स पढ़ी जाती है एंड टू सी वेदर everything is normal. But we cannot conclude our decision on that. It is for conclusion we have to do many more tests, and we should know why we are studying this, because it has completed 100 years. And ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी अक्सर पूछता है जब ये एनिवर्सरीज होगी, ऐसे 50 साल की एनिवर्सरी, 100 साल की एनिवर्सरी. सो दिस मेक्स इट इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम. नाउ moving to the another article, it is about the wholesale price index. We had seen 16 months high in wholesale price index, but we should know one thing, that wholesale price index does not contain the service spot. And also अगर हम CPI देखेंगे, that is 5.08%, it contains the service spot. And दूसरी बात जो CPI की है कि it is important for the RBI and the government to frame the policies. WPI, it is now ये पुराना कंसेप्ट बना है. वी हैड सीन 3.4% WPI है. इसमें अगर फूड का पार्ट देखेंगे दैट इज़ 8.7%, और CPI में जो इन्फ्लेशन है फूड की वो है 9.4%. जो नाउ क्वेश्चन इज, डू वी रियली नीड WPI? अगर हम देखेंगे DPIIT, they stated that government is very close to introduce producer price index. The government is trying to replace this WPI by producer price index, because it जो WPI में there are some concerns. एक डबल टैक्सेशन की, वो सर्विस को डबल टैक्सेशन की कंसर्न है. दूसरा वो सर्विसेज को नहीं लेता बिकॉज सर्विस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर इकोनॉमी राइट नाउ. और तीसरी बात मतलब कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए. सो and also for the policy making CPI is important. So it is said that this WPI will be replaced by the producer price index PPI, and this PPI will include both goods and services. So this was about WPI. Important thing in it that it has seen the 16 months high. It is 16 months high. This मतलब कि अभी चल रहा है 16 months में सबसे ज़्यादा ऊंचा है. और दूसरी बात WPI is right now जो इन्फ्लेशन है 3.4%. और एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें पता होनी चाहिए which is very basic, it does not include services. तीसरी मतलब और एक बात इसमें प्रॉब्लम हो सकती है डबल टैक्सेशन की, मतलब डबल काउंटिंग की. So these are some issues with it, and it is said that it would be replaced by producer price index very soon. Now moving to the another article which is related to the Indian Council for Research for Agricultural Research.
here हमने देखा दे वुड बी अनाउंसिंग न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, वो ये मतलब कि वो नई वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स which would be the climate resistant, weather resistant, and they would promote the oil seeds to for the better production, मतलब कि better production के लिए these crops would be introduced. So मतलब कि अगर हम और एक बार इसको समझना चाहेंगे, सो दे आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्रॉप्स, दे आर दोज क्रॉप्स विच वुड बी क्लाइमेट रेजिस्टेंट, वेदर रेजिस्टेंट, दे विल प्रमोट द ऑयल सीड्स फॉर द बेटर प्रोडक्शन। मतलब अगर हम ऐसा क्रॉप लाएंगे जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो, वेदर रेजिस्टेंट हो, चाहे ड्रॉट हो कुछ हो, तो वो अपना प्रोडक्शन देगा, तो उसकी वजह से फार्मर्स इकोनॉमी वुड बी प्रोटेक्टेड। और दूसरी बात, व्हाट दे प्रमोटेड वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, ये मतलब कि ये थीम इन्होंने प्रमोट की। इसमें क्या था, पहले क्या था, किसी एक प्रोडक्ट पे 2-4 साइंटिस्ट काम करते थे एंड देयर was no cooperation between them, so duplication of research was there. So now they are going to replace it by one scientist one product. इसमें क्या होगा, जो साइंटिस्ट होंगे they have to inform on what work they are working on, और उनका रिसर्च किस पे है और उनका प्रोग्रेस किस पे, so that there would be better understanding होगी better, or it would lead to the better development of this of our agriculture. So in this Indian Council for Research, Council for Agriculture Research, they had what we have to in this article, what we understood, that they are announcing new varieties of crops which are climate resistant, weather resistant, and they are going to promote oil seeds for the better production and for the welfare of the फार्मर्स। और दूसरी बात, दे इंट्रोड्यूस्ड वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। इसमें क्या, पहले क्या होता था, एक प्रोडक्ट पे बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते थे, डुप्लीकेशन था, देयर वर चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन, लीस्ट कोऑपरेशन बिटवीन देम। नाउ उनको नाउ व्हाट दे हैव चेंज्ड कि साइंटिस्ट दे on the beginning of the year, every year they have to introduce their theme, उनको किस पे काम करना है, on which they are working, वो किस पे रिसर्च पेपर डेवलप कर रहे हैं और उनका वर्क कहाँ पे पहुंचा है, they have to give everything in written every year, so that it will कोई duplication now, or there would be better results from this. I hope you understood it, and it would be beneficial for you. Now moving to the another article, here it is about the India Russia, they have doubled ruble payments in 2024. अगर हम देखेंगे how it has helped, how this increased, how this had happened, हमने देखा from last 2 years there is war going on between Russia and Ukraine. So because of this war between Russia and Ukraine, the West has sanctioned the Russia, US has sanctioned the Russia. So there is, तो जो उसकी वजह से those, because of those sanctions, the India, it was the opportunity time for India to poke itself in it, and they traded with Russia in arms and in oil, crude oil, जो मतलब कि हमने पहले भी पढ़ा, जो crude oil between India and Russia, the trade between India and Russia has मतलब कि increased so much that it has overtaken the Saudi Arabia. Also because of this, जो हमने trade किया, जो ये opportunity ली, but मतलब कि जो भी trade हमने किया, but still we are on the trade deficit, हमारा deficit ही चल रहा है, there are more imports than exports. And also one thing जो जिस चीज़ ने हमें help की, there is the domestication of currencies, because के जो sanctions थे Russia पे, they were not able to, the banks in Russia, they were not able to purchase or sell in the dollars. So they were thrown away from the SWIFT system. So it was the opportunity time for India to trade in the domestic currencies. Because of that trade, between Russia and India, the trade had doubled in ruble payments in 2024 because of this ban on Russia, as Russia has been thrown away from the SWIFT system. There is no trade in dollars, so it led to the trade between rupee and ruble. And also अगर हम देखेंगे, India took the opportunity, but at the same time there is another power who is our neighbor. They took this opportunity and they benefited themselves. उन्होंने trade किया with Russia, and they had internationalized their currency yuan,
और सबसे ज़्यादा ट्रेड रशिया और चाइना के दरमियान यूरोन में हुआ चल रहा है इस वक्त, एंड दे आर मेकिंग देयर करेंसी, दे आर इंटरनेशनलाइजिंग देयर करेंसी. सो वी आर लैकिंग बिहाइंड चाइना इन दिस, बट वी हैड बीन मतलब कि हमें भी इसमें बहुत सारा मदद हुआ है, हमने भी बहुत सारा अचीव किया है इसमें, बट देयर इज़ ह्यूज कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन दिस. अगर हम देखेंगे बिटवीन रशिया एंड चाइना, इट इज़ 95% ऑफ ट्रेड हैपनड इन यूरोन itself. So this is how far we are from the China, but we had doubled our trade, our domestic currency, our trade in the domestic currencies. Moving to the last article of today's discussion, it is about the trade deficit. It has widened by 9.4%. अगर हम देखेंगे from last 4 quarters, the surplus has increased in the current accounts. Growth in service exports has increased, but at the same the merchandise exports has increased, but at the same time the merchandise imports had increased also. If अगर हम देखेंगे on data, the merchandise import है that is equal to 56 billion dollars, which leads to the trade deficit of 21 billion for India. So this is how our trade deficit is right now. It has widened by 9.4%. राइट नाउ अगर एक्यूरेट फिगर्स में देखेंगे इट इज़ 21 बिलियन. और दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फोकस एक्सपोर्ट्स अगर हम देखेंगे विच वर इन द आर्टिकल, इट वाज इलेक्ट्रॉनिक्स, इट वाज फार्मास्यूटिकल्स, इट वर एग्रीकल्चरल कंपोनेंट्स. So with this we conclude today's discussion. Let's recap before we end the video. First we discussed about the gig economy. We discussed how the proposals from states can harm the gig workers, how it can create more confusion in the country in the labor laws, and how the government should adopt and implement the labor laws produced forward by the center. And as those labor laws, they are well beneficial for the gig workers, because they have defined the gig workers, and also they provide the security for them. Then in the next article we discussed about the role of money bill and how it can be misused by the ruling party to pass the laws. क्योंकि हमने देखा मनी बिल इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बाय द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और हमें ये भी पता है प्रेसिडेंट वही करता है जो उसको गवर्नमेंट कहती है. सो दूसरी बात, जब वो राज्यसभा में जाते हैं दे हैव लीस्ट पावर्स एंड दे कैन ओवरराइड राज्यसभा इजीली आपको कोई लॉ फ्रेम करने के लिए. उसी के बिना पर दिस केस इज इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड वेदर द स्पीकर डिसीजन टू मेक एनी बिल, टू declare any bill as a money bill is final or not. It is in the Supreme Court. Then after that we discussed about the EEG, 100 years of EEG, how it was conducted back in 1924 by Hans Berger. It is electroencephalography. मतलब ये क्या करता है, it measures the electromagnetic, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये मेजर करता है. हम इन सिंपल टर्म्स कहेंगे जो न्यूरॉन्स के थ्रू बन जाती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सोडियम पोटेशियम आयंस. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निकलता है मतलब इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स की वजह से, दैट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू इट, एंड इट वुड बी यूज्ड टू diagnose whether it is working properly, whether the body is working properly or not. But its decision is not final. We still have to do many tests after that. इसके बाद हम we discussed about the WPI, how it is about to be replaced by the PPI, producer price index, because there are some drawbacks in WPI. It does not contain the services section. There are chances of double counting. Then after we discussed about the Indian Council for Agriculture Research, how they had brought up, they are promoting the climate resistant seeds, weather resistant seeds and oil seeds for better production, and also they promoted one scientist one product. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा कि पहले बहुत सारे साइंटिस्ट किसी एक प्रोडक्ट पे काम करते थे. नाउ एवरी साइंटिस्ट हैव टू गिव देयर प्रपोजल व्हाट दे आर वर्किंग ऑन, उनकी वर्क कहाँ पहुंची है और वो कब तक वो कंप्लीट करेंगे. देन आफ्टर दिस वी डिस्कस्ड अबाउट द India, Russia, they have doubled rupee ruble payments in 2024. This is mainly due to the Russian-Ukraine war.
उसकी वजह से इंडिया टुक द अपॉर्चुनिटी, उनका ट्रेड इंक्रीज हुआ रशिया के साथ, दे ब्रॉट चीपर ऑयल फ्रॉम रशिया। और दूसरी बात, दे वर नॉट एबल टू पे रशिया इन डॉलर्स बिकॉज देयर इज स्विफ्ट सिस्टम, they had been thrown out of the SWIFT system. Now India is paying in the domestic currency, and their trade in domestic currency has increased, and this is the another step to the internationalization of Indian currency. But at the same time, there is our neighbor China, who has achieved 95% in yuan, मतलब कि उनका ट्रेड 95% ऑफ देयर ट्रेड इज यॉन, मतलब करेंसी यॉन में है, in their own currency, or they are very much above us in this matter. Then we have the last article, it talks about the trade deficit. It has widened by 9.4%. We had seen in fourth quarter previous year, we had seen surplus in current account. The growth in service export has increased. India's merchandise has grown, imports of merchandise has increased also, and much faster, which is $56 billion. This मतलब इसकी वजह से अगर हम देखेंगे देयर इज अगर हम देखेंगे हमारा मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट कितना है, दैट इज $35 बिलियन। तो इसकी वजह से वी आर ऑन द ट्रेड डेफिसिट साइड, $21 बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट है इन मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अगर हम देखेंगे आवर मेजर एक्सपोर्ट्स क्या रहे हैं इस साल, वो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, pharmaceuticals, agricultural components, and others. So with this we conclude this article, this discussion today. Please do subscribe the channel and stay with me. Thank you very much. Thank you very much, and best of luck.